equations, they are one of the very basic things, in chemistry, जिसके ऊपर everything revolves around formulas and equations, everything builds on top of that. So, so starting, we did ionic compounds, we did covalent compounds, we did all sorts of metallic giant covalent structures. So every substance, chemical compound at least, has a particular formula. Okay, so I'm going to start off with number one. Number one is, TK, remember, this is one of the key things, TK, in chemistry. If you get this right, Baki, the rest of the things, Joanna, they all build around it. So, starting off with the first thing, that's the formula of ionic compounds. Now, when it comes to formulas of ionic compounds, we have kind of done drawn and cross diagrams, and we know how to what ionic compounds are. Okay, so ionic compound was a lattice. Okay, so so I'll just let me quickly take a picture of a lattice and stick it over here. So ionic compound, ताकि साथ ही ना notes बनते जाए. अच्छा, ionic compound is it's lots of positive and negative ions joined together. कोई थोड़ी सी एक सेकंड बेहतर पिक्चर मिल जाए. ठीक है, दिस वन ये हम पहले भी यूज कर रहे थे. चलिए ये आगे. अच्छा, so this is what an ionic lattice is. This is what we had studied previously, that you had a metal ion and you had a non-metal ion. One of them was positive, the other one was negative. Okay, so you had a positive ion and you had a negative ion, and they were all strongly attracted to each other, and it was a giant lattice. So when it comes to formulas, the formula of an ionic lattice, TK, and remember I told you, okay, you always use the word, you don't use the word molecule for them. It's a giant lattice. So you either call it an ionic compound or you call it an ionic lattice. So what does the formula represent? What information does that give you? The formula gives you the ratio. It gives you the ratio in which the ions are going to be present. So it doesn't tell you the actual number of ions in the lattice because it's a giant structure. There could be millions and billions of ions in the lattice. So it just gives you the ratio in which ions are present. So for example, if you have NaCl, the formula of NaCl is it's obviously NaCl. There's one Na and one Cl. What that means is, it doesn't mean that NaCl has one Na and one Cl. It just tells you that if you have 1 million sodium ions, there would be 1 million Cl ions. TK, if you have 2 million sodium ions, there would be 2 million Cl ions in the lattice. So it tells you the ratio. And different ionic compounds have different ratios. So we're going to do the formula of ionic compounds or ionic lattices initially. And we know, TK, based on our dot and cross diagram, the knowledge of dot and cross diagrams, we know that if there's a substance in group 1, it's going to have a charge of +1. If there's something in group 2, बल्कि एक second ये table draw कर ले. So you have all these groups, group 1, group 2. बीच में there is transition metals. And then you have your group 3 and your group 4 and 5 and 6 and 7, and then finally your noble gases or group 0, also known as group 8. So किसके ऊपर क्या चार्ज होता है? Group 1 के ऊपर obviously +1 होता है, group 2 is +2, group 3 is +3. 4, अगर वो ion बनाए, it's going to be +4 or -4. It could form both. 5 would be -3. 6 is going to be -2. 7 would be -1. And this one is not going to have
any charge. And transition metals जो है ना, they have variable charges के if there is, तो उनका आप पहले से नहीं बता सकते. You're not sure what the charge is going to be. Iron could be +2, it could be +3, it could have many different oxidation states or charges. So you can figure out the charge of different elements by just looking at the periodic table. And an ionic compound is made up of a metal ion and a non-metal ion. ठीक है, ये दोनों मिलके ionic compound बनाते हैं. So it's not going to be two metal ions, it's not going to be two non-metal ions, it's always going to be a metal ion, a positive ion with a negative ion. Formula बनाना आसान है कि you pick any metal, you pick any non-metal. ठीक है, for example, I pick aluminium, and aluminium इधर मैं add भी कर देता हूँ. Aluminium is part of group 3. ठीक है, so that's where aluminium is. So that's my metal. ठीक है, positive ions यहाँ तक है, 3 तक. And I pick any non-metal. So they're going to form an ionic compound. Aluminium will have a charge of +3 and fluorine will have a charge of -1. So how would the formula be made? There's a thing called crisscross dot and cross diagram, and we did that. Aluminium loses 3 electrons, okay, because it's in group 3. Fluorine is just gaining 1 electron. Now the number of electrons gained and lost, they have to be equal. So there should be 3 fluorines because fluorine only gains 1. So if you want fluorine to gain 3 electrons, you need 3 fluorines. So is that clear? Amna, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the thing is, aluminium would be +3, fluorine would be -1. And the easy part is there's a thing called crisscross. Okay, this is known as the crisscross method. Without drawing the dot and cross diagram, without going into any detail, you can figure out the ratio कि वो जो lattice है ना उसके अंदर ये positive and negative ions का ratio, in what ratio would they exist? So one is +3, the other one is -1. So what you simply do is bring the 3 over here और 1 यहाँ पे है तो उसको इधर लगा दो. ठीक है, so the formula is going to be AL would be 1. You don't need to write 1. मतलब इधर मैं show करने के लिए, even if you write 1, there's nothing wrong with it. And fluorine would be 3. So the formula is going to be AlF3. Okay, that's how you're going to figure out the formula of any ionic lattice or compound. So a metal positive ion, a non-metal negative ion. That's it. So I'm going to do a couple of other questions similar to this. We can have aluminium. सर ये एल्युमिनियम एंड जो फ्लोरीन जो 3 हैं इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम फ्लोराइड. मैं उस पे नाम पे आता हूँ. ठीक है, just give me 1 second. Just 1 second. अच्छा, अभी crisscross के ऊपर aluminium with oxygen, a metal, aluminium +3. Oxygen जो होता है, that's in group 6. So assalamu alaikum. So oxygen is in group 6, so oxygen will have a charge of -2. So what is the formula? It's going to be crisscross karo. So crisscross mein what you're going to do is this 3 should come over here and this 2 should come over here. It's going to be Al would become 2 and O would become 3. And what's the logic behind that? Aluminium loses how many electrons? It loses 3 electrons, right? Because it's in group 3. Oxygen is in group 6. It gains how many electrons? It gains 2 electrons. So you have to make the number of electrons that are lost and gained equal. And the only way that's possible is if you have 2 aluminiums, the total electrons lost would be, if you have 2 aluminiums, the total electrons lost is going to become 6. And if you have 3 oxygens and each oxygen gains 2 electrons, then 3 oxygens will gain a total of 6 electrons. So when you do crisscross, the electrons gain and lost automatically become equal, and that's going to be the ratio in which they're going to exist. That for every 2 aluminium ions, there are going to be 3 oxygen ions in the lattice. If you have 2,000 aluminium ions, there are going to be 3,000 oxygen ions in the lattice. So remember that. And also remember another point, and that is after you're done with the crisscross, remember the formula of ionic compound, it gives the ratio is always given in the simplest form.
So make sure whatever ratio that you get, is it the simplest ratio or not. Now 1:3 is the simplest ratio. 2:3, you can't simplify it anymore. So make sure that after crisscross, सर ऐसे कोई एग्जांपल है? हाँ मैं बताता हूँ. So after crisscross, so most of the time, 99% of the time, the ratio by default is going to come out to be the simplest ratio. So after crisscross, make sure the ratio is the simplest whole number ratio. Okay, you have to make sure. So in this case, it's automatically the simplest ratio. उसके examples करने से पहले ना I'll just add the naming part as well. Okay, पहले naming कर लेते हैं, फिर I'll give you an example of some examples where you have to simplify the ratio further. So as a naming के अंदर, an ionic compound is going to have a metal ion and a non-metal ion, a positive ion and a negative ion. तो नाम क्या है इसके अंदर? दो चीजें. There's aluminium and the एक aluminium का ion है positive ion and the other one is the fluorine ion. ठीक है, I think fluorine की ये spelling है. अच्छा, but anyways, what happens is कि the positive ion name never changes. Aluminium atom होता है या aluminium ion, it still remains aluminium. लेकिन ये जो negative ion है ना, always its name changes. Instead of fluorine, it's going to become fluoride. IDE end में आ जाएगा. You're going to start calling it fluoride. So the name of the formula is going to be aluminium fluoride. The similar thing would happen over here as well. This is an aluminium with an oxygen ion. So the oxygen ion, the negative ion, that name changes. It becomes oxide. Uske end mein bhi na, you'll get IDE. So remember this, negative ion name always changes. It always changes and it ends with IDE. नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन ना मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ. मैंने जस्ट द एलिमेंट. So if you see N3 minus, that's not going to be called a nitrogen ion, it's going to be called a nitride ion, IDE. Sulfur होगा negative ion, group 6 में it's -2. It's not going to be called a sulfur ion, it's going to be called a sulfide IDE. सबके पीछे ना end पे ना IDE लगाते जाओ. Bromine होगा group 7 -1, so it's going to be called not a bromine ion, it's going to be called a bromide ion. The positive ion name कोई फर्क नहीं पड़ता, it's always the same, but the negative ion name always changes. Is this clear? सर जिनके आखिर में एड आता है वो ऑक्सीजन के साथ होते हैं. 8 वाला मैं बाद में आता हूँ. अभी हमने सिर्फ किस पे फोकस किया? IDE. ठीक है, तो IDE का मतलब तो जब भी ना whenever you see IDE, ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है आयोडाइड, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आयोडीन ही है. इट्स द नेगेटिव आयन ऑफ आयोडीन. ठीक है, तो अगर आईडी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है खाली वो एलिमेंट होगा. इट्स गोइंग टू बी ओनली द एलिमेंट, लेकिन उसका आयन फॉर्म नेगेटिव आयन. ठीक है, सो रिमेंबर व्हाट डज आईडीई मीन. तो इंसानों के नाम के एंड पे ना you'll get aluminium fluoride, aluminium oxide and so on. तो टेबल आपके सामने, चार्जेस आपको पता होगा, एक पॉजिटिव आयन उठाओगे एंड इट्स यू गोइंग टू पुट इट नेक्स्ट टू अ नेगेटिव आयन एंड दैट वुड बी योर फॉर्मूला. ठीक है, सो इट्स अ सिंपल थिंग. There's no rocket science to it, so we'll just do a couple of more examples quickly. Tell me, I've got magnesium, which is group 2.
and I've got chlorine, which is group 7. So what is going to be the formula of this thing? कोई भी बता दे. MgCl2. 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 ठीक है, so it's going to be MgCl2. It's going to be Mg2 plus. Cl is minus 1. You do crisscross, तो Mg1 होगा और Cl कितने होंगे? They're going to be 2. It's going to be MgCl2, right? And you're going to write it together. अच्छा, when you write them together, you don't write a charge क्योंकि overall it's neutral. क्योंकि the positive charge and the negative charge, it has now balanced out. Let's do another one. Let's say I've got sodium, which is Na. It's in group 1, and I've got phosphorus, which is group 5. What would be the formula of this? Na3p. Na5 and then P. ठीक है, so Na3p. Na3p. Na would be Oh, plus 1. sorry. Yeah. P is going to be minus 3, right? Because it's in group 5. So it's going to be Na would become 3. ठीक है, leave the charges wherever they are. ठीक है, I'm not interested in the minus and the plus. Just the numbers. Bring the 3 over here, and P would become 1. ठीक है, you just don't write 1. So it's going to be Na3p. The name would be, what would be the name? What would you call this? Sodium what? Sodium phosphate. Name, Phosphide. Phide. ठीक है, it's going to be phosphide. ठीक है, Phosphate is PO4, right? हाँ, 8 पे मैं भी आता हूँ इसके बाद ना. ठीक है, अभी फिलहाल just remember कि we just talking about the element. ठीक है, if the element only forms the negative ion, then it's an ide. ठीक है, it would bromide, sulfide, nitride. ठीक है, so वो अकेला element होगा with nothing. It's just, I mean, phosphide is just phosphorus, just P, nothing with it. ठीक है, nothing next to it. तो this is sodium phosphide. एक वो कर लेते हैं जिसके अंदर ratio simplify करना है. ठीक है, transition metals का क्या करेंगे? Now with transition metals, I told you can't really figure out the charge from the periodic table because they can have multiple charges. ठीक है, you can have +2 and +3 both. So for example, उसके अंदर ना, when you write the name, so in the question they give you what the charge is. So for example, you've got iron 3. Like silicon oxide, sir. The silicon has a 4 with it. हाँ, लेकिन वो कोवलेंट में आ जाता है. ठीक है, मतलब लेकिन वो बात ठीक है. ठीक है, लेकिन मैं आयनिक की अभी बात कर रहा हूँ. वैसे वो बात ठीक है, एग्जाम्पल अप्लाई होता है तो उसके अंदर ना द चार्ज इज मेंशन्ड इन द फॉर्मूला. ठीक है, तो दैट मीन्स के आयरन का सिंबल जो होता है ना प्योर टेबल, दैट्स Fe, और 3 लिखा है उसका मतलब इट्स +3. ठीक है, बिकॉज द प्योर टेबल यू कांट फिगर आउट द चार्ज बाय लुकिंग एट द प्योर टेबल. और ऑक्साइड है तो अकेला ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन इज ग्रुप 6, सो दैट्स -2. तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? Fe2O3. ठीक है, Fe2 and O3. तो ट्रांजिशन मेटल का इस तरह होगा. वो कर लेते हैं जिसमें सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स से आई हैव tin 4, tin 4 ऑक्साइड ही कर लेते हैं. सो tin is Sn और फॉर्मूले में लिखा हुआ है 4, तो 4 और रोमन में 4 लिखा होगा. होपफुली एवरीवन नोज व्हाट रोमन इज. ठीक है, रोमन में 4 क्या होता है? सो Sn is +4 and oxygen is group 6, so it's -2, right? तो मेरे इसका फॉर्मूला क्या होगा? SnO2. ठीक है, Yes, SnO2. तो मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. यानी अगर if you do crisscross, it's going to become Sn2 and O would become 4. But this ratio can be further simplified क्योंकि 2:4 is the simplest whole number ratio would be Sn1 and O2. ठीक है, तो आप लोग ठीक थे. So it's going to be SnO2. So sometimes just be keep most of the time it's going to be automatically the simplest ratio, but you have to be careful because sometimes the ratio is not the simplest ratio, so you make it the simplest ratio. क्योंकि याद रखो कि you're getting the formula tells you the ratio. It doesn't tell you the actual quantity. So it's always in the simplest ratio. So this is how you figure out formulas of ionic compounds.
तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा एंड यूल बी एबल टू फिगर आउट, इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड. अच्छा, ये आपके पास होगा एंड यू व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज कि फिगर आउट कि किस एलिमेंट पे क्या चार्ज है. एंड रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आयन एंड अ नेगेटिव आयन. मतलब बीच में ना मैं एक वो भी ऐड कर देता हूँ. अच्छा, बीच में ना एक एरो पता नहीं क्यों लग गया, एक सेकेंड. So बीच में ना non-metal and this side is metal. So you're going to pick one of them from the metal side and one of them from the non-metal side. ठीक है, that's it. Now तो ये आपके आयन्स है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. Is this clear to everyone? यस जी सर. Yes. ठीक है, सारों को क्लियर है. तो अब ये करना है कि there's going to be another thing कि it's not just these ions जो periodic table में नजर आ रहे हैं ना, you don't only have those ions, there are other ions as well. ठीक है, sometimes what happens is, what are these other ions? They're known as polyatomic ions. एक से मैं लाइन लगा लूं. अच्छा, now तो एक तो ये एलिमेंट है, अकेला एटम जो है ना आयन बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Now sometimes what happens is there's a thing called polyatomic ion. अच्छा, I'll give you an example of what a polyatomic ion is. What happens, polyatomic का मतलब है कि multiple atoms bonded together. So it's basically, sometimes what happens is a covalent molecule might gain or lose electrons to complete its outer shell. ठीक है, मतलब कोई एटम है, उसको उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है. सो कोवलेंट मॉलिक्यूल, इधर बीच में स्पेस होनी चाहिए थी, जस्ट वन सेकेंड. So forget this. Sometimes what happens is a covalent molecule might end up gaining or losing electrons to complete its outer shell. So I'll give you an example. Now I told you that covalent molecules, they don't have a charge. Okay, they don't usually have a charge because no one is gaining or losing electrons. As an example, if I have oxygen, if I have an oxygen atom, right? Oxygen has a total of 6 electrons. It's in group 6 in its outer shell. इसको कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये कोवलेंट? सर 1. नहीं, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? How many electrons does it need? 2. 1 sir. 2 sir. 2. So it's going to make 2 bonds, right? So let's say there are 2 hydrogen atoms. So there's one hydrogen atom. बस एक सेकंड देना, ये सर्कल बन जाए. अच्छा, सही है. अच्छा, so there's this one hydrogen atom और इस तरह का एक और हाइड्रोजन एटम, थोड़ा सा इसमें बड़ा है. जस्ट वन सेकेंड. अच्छा, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है. So I've got these 2 hydrogen atoms और इनके ना obviously electrons है. Hydrogen has only 1 electron and it's a cross. The other hydrogen atom also has 1 electron. Now non-metals don't like to lose electrons, so in this case what's going to happen is कि if I have this hydrogen atom, तो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और खींच के अपने साथ जोड़ लेगा. So oxygen gets 1 electron. Hydrogen आके ना उसके साथ attach हो जाएगा. That's what a covalent molecule is. And I've got this other hydrogen atom. The same thing happens. Oxygen उसको खींचेगा अपने साथ जोड़ेगा, and in that way
they end up sharing 2 electrons, right? तो oxygen के electrons पूरे हो गए ना. It pulled 1 electron from here and pulled 1 electron from this side, right? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Achha, so this is a neutral covalent molecule because no one gained electrons, no one lost electrons. They ended up sharing electrons, right? So it's a neutral covalent molecule. This is not an ion. Now, sometimes what would happen is, okay, the oxygen cannot find 2 hydrogens, right? So, for example, this hydrogen is not there, okay? And iska jo electron hai na, that's also not there, okay? So, the oxygen ko abhi bhi kitne electrons chahiye? It needs 1 electron, right? So sometimes sir. sometimes what would happen is that there is no hydrogen on this side. So abhi oxygen ko electron to chahiye, it needs 1 electron, right? So अब क्या होगा? अभी होगा कि maybe there is a sodium atom somewhere. और इसको सोडियम के कितने शेल्स होते हैं? सोडियम के सोडियम के you have 3 shells. तो एक और शेल होगा. अच्छा, सोडियम has a total of, इसका एक और शेल ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, 3 शेल्स हो गए सोडियम के. और इस वाले को बस ठीक है, तो काफी है. अच्छा, सोडियम has 3 shells and sodium has a total of, now you have a metal. तो आपके पास ना हाइड्रोजन नहीं है. This oxygen still needs 1 electron because covalent bonding तो उसने कर लिया, लेकिन it's still not complete. It still needs 1 more electron. There's a space available for 1 more electron. और यहाँ पे बैठा हुआ है एक मेटल. मेटल क्या करता है? मेटल is always ready to lose electrons. ठीक है. तो इस सोडियम एटम के पास it has a total of 2 electrons in the first shell, 8 in the second shell, and there is 1 electron that's very far away, that's this one. तो सोडियम बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसको हम फुली शेड कर देते हैं. तो ऑक्सीजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इज गोइंग टू ट्राई एंड पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, जैसा वो पहले हाइड्रोजन के साथ कर रहा था. हाइड्रोजन वाज नॉट विलिंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज हाइड्रोजन वाज अ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते. लेकिन अब यहाँ पे आगे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने? सोडियम ने. सोडियम फुली मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है. इट्स अ मेटल. उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. सो इट्स गोइंग टू ट्राई एंड लूज दिस इलेक्ट्रॉन. तो वो लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो ये सारा वो लूज करेगा, ये आउटर शेल ही उसका खत्म हो गया. तो वो पूरा शेल खत्म हो गया और वो इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के पास. तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई. इट्स आउटर शेल इज कंप्लीट, राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, सारों को क्लियर है? Yes. अच्छा, लेकिन उसने किया ऑक्सीजन ने आधा काम किया कोवलेंट से पूरा, कि उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने एक नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया, शेयर कर लिया, राइट? तो आधा काम उसने उससे किया है कोवलेंट बॉन्डिंग से, और बाकी उसे फिर मेटल नजर आया, उसको एक इलेक्ट्रॉन उधर से चाहिए था, उसने उससे मांगा इलेक्ट्रॉन. मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार होता है. तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? इट्स गोइंग टू बी +1, राइट? बिकॉज सोडियम लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? और ये जो पूरी चीज है, दिस एंटायर थिंग, अब ये न्यूट्रल नहीं है. व्हाई इज इट नॉट न्यूट्रल? क्योंकि नाउ इंस्टेड ऑफ शेयरिंग इट हैज बोरोड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन एल्स. ठीक है, इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए टोटल? ये एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से गेन कर लिया. तो इसका चार्ज क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी -1. So is this clear? One. Yes, sir. Yes, sir. So now it's no longer neutral. It's like a covalent molecule that has gained 1 electron. अच्छा, रिमेंबर ये डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो कुछ हो रहा है ना, ये पेपर के अंदर नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है? आई एम जस्ट मतलब फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है. दिस थिंग इज नोन एज OH with a charge of -1. मतलब there's 1 O and 1 H and it total has a charge of
-1. This is called a hydroxide ion. ठीक है, तो आयंस वो नहीं होते, सिर्फ वो नहीं है जो प्योरिटी टेबल में मेंशन है, लाइक ग्रुप 1 2 3, ठीक है, खाली खाली एक एटम आयन नहीं बना सकता. एडिशनली यू कुड हैव मॉलिक्यूल्स जो कोवलेंट बॉन्डिंग करते करते ना बीच में आयनिक बॉन्डिंग शुरू करते हैं, क्योंकि दे रन आउट ऑफ एटम्स, मतलब उसको मेटल ही नजर आ रहे हैं, मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो दिस इज योर NaOH, दिस इज Na+1, दिस इज OH -1. तो the purpose of this is that you know okay, what is the concept behind a polyatomic ion. ठीक है, it's a molecule that has ended up somehow gaining or losing electrons. Is this clear? सर उस फॉर्मूले में हमें नहीं पता चलता कि किस मेटल ने दिया है इलेक्ट्रॉन. हाँ, वो तो कहीं से भी आ जाए ना, मैं वो मैटर नहीं कर रहा. ठीक है, तो एन एग्जांपल दी इधर. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया ना. ओके ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसकी कोई डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बस ये कि अगले कि OH-1 आया कहाँ से. ठीक है, OH-1 यहाँ से आया. So you have to remember the formula of a polyatomic ion. You have to remember the name of the polyatomic ion. Is this clear? यस सर. ठीक है, सारों को clear है? Yes or no? Yes. Yes, sir. बस सिर्फ कॉन्सेप्ट. ठीक है, बाकी वो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि OH ion का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ. ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा. अच्छा, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो मैंने ये मेरी कहानी पता लग गई कि जी polyatomic ions, where do you actually get these polyatomic ions? So what you have to remember is कि ये polyatomic ions की ना एक पूरी लिस्ट है जिनको मेमोराइज करना है, और उनके नाम वगैरह दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, और काफ़ी सारे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर दीज polyatomic ions एंड उनकी पूरी ना लिस्ट एक. ठीक है, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. यानी अगली दफ़ा कोई अगर आपसे पूछे ना हाइड्रोक्साइड क्या होता है, you should know it's OH-1. ठीक है, you should know the name, you should know the formula, and you should know the exact charge of what these ions are. क्योंकि आगे फिर survival impossible if you don't know the name and formula. So the first one, so I'm going to start writing a list. जिसमें वो ग्रुप 1 2 3 का पता है ना चार्ज क्या होता है, तो इन सारों का भी पता होना चाहिए. So the first one is hydroxide. It is OH with a charge of -1. ठीक है, जो भी हमने किया है एग्जाम्पल. You've got sulfate. अच्छा, ये जो 8 आते हैं ना यूजुअली ऑक्सीजन के साथ होते हैं. सल्फेट इज SO4 with a charge of -2. Remember, it's not IDE anymore. IDE अकेला एलिमेंट होता था. Now it's a bunch of atoms bonded together and they're forming an ion. Then you've got sulfite. That is SO3 with a charge of -2. ठीक है, minor difference. This should be on your fingertips. You've got nitrate. That is NO3 with a charge of -1. फिर एक इसका आता है nitrite. That's NO2 with a charge of -1. और ये चार्ज पूरे के ऊपर है, मतलब ये जो OH है ना -1, ये -1 charge is on the entire thing, not just on oxygen. मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. ठीक है, so it's on the entire thing. तो क्योंकि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है ना, ये तो हमने वैसे ही डॉट रेड किया हुआ है. एटम को तो नहीं पता कि इनमें से, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं ना, उसको तो नहीं पता ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है. तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है ना. तो एटम को तो नहीं पता कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से आया था. मतलब अगर आपके पास तो मतलब ये डॉट और क्रॉस जो है ना, ये तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है. ठीक है, तो the whole molecule has actually gained 1 electron from here. So the whole molecule has a charge of -1. Now nitrite, then you've got phosphate, and this is PO4 with a charge of -3. You've got phosphite, which is PO3 with a charge of -3. You've got ammonium,
ठीक है. That's different from ammonia. Ammonia भी एक चीज होती है. Ammonium is NH4 plus 1. You've got hydrogen carbonate. Now that one is HCO3 with a charge of -1. खाली carbonate भी होता है. ठीक है, that is CO3 with a charge of -2. Hydrogen sulfate होता है. That is HSO4 with a charge of -1. Dichromate 6. अच्छा ये थोड़े से ना less common or less frequent ions है. But you should remember those as well. That's Cr2. O7 with a charge of 2 minus. Magnate 7. That one is MnO4 with a charge of -1. अच्छा और कोई इंपॉर्टेंट मिस तो नहीं किया. कितने हो गए मेरे पास? 10-15 हो गए. ठीक है. Just let me quickly think. Nitrates, hydroxides, everything. ठीक है, that's fine. So these are the ones. Yep, that's it. ठीक है. अच्छा तो ये सारे जो है ना ये मेमोराइज करने हैं. यानी कल को आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अच्छा कल कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज कार्बोनेट आयन, तो आपको पता होना चाहिए CO3-2 क्योंकि फॉर्मूलाज के अंदर ये सारे यूज होंगे. इज दिस क्लियर? तो Yes, sir. और इसके ऊपर Yes, मैं sir. लिख दूं ये वीकेंड का काम है कि इसको मेमोराइज करना है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि वो होती है ना फंडामेंटल चीज. मतलब ये मेमोराइज नहीं होगा ना आगे कोई काम कर नहीं सकोगे आप. ठीक है. वो तो आसान है. ग्रुप 1-2 वो तो प्योर टेबल गिवन होता है ना, वो तो उसको देख के यू कैन इजीली फिगर आउट के व्हाट्स द चार्ज, व्हाट्स द मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है. यू जस्ट हैव टू लुक एट द प्योर टेबल. ठीक है. बट दिस थिंग यू कांट रियली लुक एनीवेयर, यू हैव टू मेमोराइज दिस. तो नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, एवरीथिंग हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स. Or these ions would form ionic lattices exactly the way the other ions were forming ionic lattices. Okay, there's going to be a positive ion and there's going to be a negative ion. As an example, you're going to have, let's say, calcium. It's in group 2. Group 2 is +2. And I'm going to pick a negative ion from the list above. एक तो वो pure table से you can pick a negative ion, you can pick a negative ion from the list that's given above. So let's think of nitrate, which is NO3 with a charge of -1. अच्छा एक तो ये चीज आती है, think of this as one thing. ठीक है. मतलब इसको आप NO6 नहीं कर सकते. इसको आप it's an NO3 ion. मतलब it's one single entity. तो अब मुझे बता कि if you do crisscross तो फॉर्मूला क्या होगा? NO3 bracket 2. ठीक है. तो ब्रैकेट यूज करना क्योंकि क्रिस क्रॉस करोगे तो CA, इसका मतलब CA 1 होगा और NO3 2 होने चाहिए क्योंकि 2 को इधर लेके आओगे. सो NO3 शुड बी 2. तो यू गोना पुट अ ब्रैकेट अराउंड NO3 और फिर बताना है कि जी NO3 ट्वाइस होने चाहिए. ठीक है. देयर शुड बी 2 NO3s. सो लर्न टू यूज ब्रैकेट्स विद दीज पॉलीएटॉमिक आयंस. कि जब आपने बताना है कि इफ आई डू अनदर वन, लेट्स से एल्यूमिनियम कार्बोनेट. तो एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3 सो दैट्स +3. कार्बोनेट ऊपर देख लो लिस्ट के अंदर, दैट्स -2. तो फॉर्मूला क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी Al would become what? How many? If you do crisscross. 2. ठीक है. Al2 and CO3 bracket 3. तो CO3 जो है वो 3 होने चाहिए. So there should be you should put a bracket around it और फिर 3 करना है. ठीक है. So one of them is calcium nitrate, the other one is aluminium carbonate. और इस तरह आपने फॉर्मूला बनाना है. So I'm going to write down a list of questions कि एल्यूमिनियम +3 है, बल्कि एल्यूमिनियम को ऐसा लिखते हैं जो बैरियम का कर लो. खुद ही प्योर टेबल से देखो इसका चार्ज क्या होना चाहिए. बैरियम विद all negative ions in the list.
मतलब ये सारे फॉर्मूलाज बनाओ कि मतलब बैरियम इज अ पॉजिटिव आयन, इट्स अ मेटल आयन। तो इस लिस्ट के अंदर ना जितने भी नेगेटिव आयन्स है ना उनके साथ इसका फॉर्मूला बनाते जाओ कि बैरियम और हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बैरियम सल्फेट क्या होगा, बैरियम सल्फाइड क्या होगा, बैरियम नाइट्रेट। सो राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। उसी तरह डू इट फॉर पोटेशियम with all the negative ions that are present in the list. एल्यूमिनियम भी कर लो, एल्यूमिनियम का भी सारों के साथ बना लो, ठीक है। लिखोगे तो, और फॉर्मूला इसी तरह जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने किया हुआ है उस तरीके से करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये मैं बोर्ड का लिंक भी ना तो उसके अंदर सारे नॉन मेटल्स हैं, किस में, नेगेटिव आयंस हैं सारे, हाँ मतलब एंड वो अमोनियम के अलावा। हाँ अमोनियम के अलावा, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स है ना ये, तो उसके पॉजिटिव आयन के ओके साथ नेगेटिव आयन ही होगा ना। तो इसके अलावा बाकी सारे ठीक है। तो ये मैं उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर भी भेज रहा हूँ। आई एम सेंडिंग द लिंक टू द बोर्ड एज वेल, जस्ट 1 सेकेंड। इसी ग्रुप के ऊपर पोस्ट करने आंसर्स, ठीक है। अच्छा जस्ट 1 सेकेंड की तरह आपका और प्लस बोर्ड का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, विल कंटिन्यू, आई एम शेयरिंग द बोर्ड लिंक। तो ये फिर ये मुझे भेज देना काम, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके सर, ठीक लास्ट है, सर। अल्लाह हाफिज़। Officer.